children, I hope you all are good. Today in the GK we are going to discuss exercise of chapter 18 and the name of the chapter is Famous Poets. Right from the childhood, our English classes have been incomplete without various beautiful poems, which also motivated us to write few of our own also. Here are the brief accounts of some famous poets of the world. Read and enrich the knowledge. तो हम कुछ फेमस पोएट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं बेटा, हमें उनके बारे में पता होना चाहिए. सबसे पहले हम बात करेंगे जेम्स आर्लिंगटन राइट की. ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट prolific American poets of the 20th century. He was the proud recipient of the Pulitzer Prize and he made a debut in the literary world in the year 1956 with The Green Wall. His second book, Saint Judas, came soon after and earned him Hoyana Book Award. He was also diagnosed with the cancer. And in 1980 in his last book The Journey was published. तो ये थे जेम्स आर्लिंगटन राइट. सेकेंड नंबर पे बात करेंगे हम एरिस्टोफेन्स की. ही वॉज एन एंशियंट ग्रीक कॉमिक प्ले राइट जो थे वो थे. ही इज़ ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज द फादर ऑफ कॉमेडी एंड द प्रिंस ऑफ एंशियंट कॉमेडी. इट वॉज बिलीव दैट ही रिक्रिएटेड द लिस्ट ऑफ एंशियंट. कितनी बड़ी बात है. देन ऑस्कर वाइल्ड की बात करें, इरिश पोएट थे, ऑथर एंड वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्ले राइट ऑफ द विक्टोरियन एरा. एंड एज वेल एज हिज फुल नेम वॉज ऑस्कर फिंगल ओ फ्लेराइट वेल्स वाइल्ड. वाओ, कितना बड़ा नेम है उनका. मैनी ऑफ हिज प्लेस सच एज द इम्पॉर्टेंस ऑफ बीइंग ऑनेस्ट एंड सलोम, ये देखो इम्पॉर्टेंट है ना इनके, ये are translated into the foreign languages, adapted into film and poems. He won Newdigate Prize for his poem in 1878. Then Homer की बात करते हैं. He was also a legendary ancient Greek poet. Wrote the epics that is Iliad and Odyssey. These epics were the part of Western canon of literature and greatly influenced the history of literature. He was believed to have written in the entire epic cycle known and wrote the Theban poems about the Oedipus and his son. He was considered the teacher of Greece also. Then fifth बात करते हैं मौलाना जलालुद्दीन रूमी की. 13th century पर्शियन पोएट हैं, इस्लामिक. आप ये देखोगे तो आपके इस्लामिक दरविश और सूफी मिस्टिक भी ये कहे जाते हैं. ही इज़ रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पिरिचुअल मास्टर्स एंड पोएटिकल इंटेलेक्ट्स. बिलोंग टू द फैमिली ऑफ लर्नेड theologians made use of everyday life circumstances to describe the spiritual world. His poem also have been translated into the different languages. जॉन मिल्टन की बात करें तो इंग्लिश पोएट हैं. देन पोलेमिस्ट एंड सिविल सर्वेंट for the Commonwealth of England. He was an influential man of letters, served under Olive Cromwell. Apart from his writing in English, beta, he wrote in Latin, Italian also, and earned an international reputation during his lifetime. He is remembered for his most famous epic poem, Paradise Lost. वो आपने of course पढ़ी होगी Paradise Lost, बहुत अच्छी poem है. अब हम बात करेंगे जोसेफ रुडयार्ड किपलिंग की. ही वॉज बॉर्न ऑन 30 December 1865 इन मुंबई, इंडिया, टू हैव अ ब्रिटिश फैमिली एट दैट टाइम. सो ही रोट द फेमस फिक्शन जंगल बुक, द जंगल बुक, जिसपे बहुत सारी आप देखो मूवीज़ बन चुकी हैं, सीरीज़ बन चुकी हैं. ही वर्कड इन इंडिया विद अ मच रिनोन्ड न्यूज़पेपर द पायोनियर. उस न्यूज़पेपर के साथ भी उन्होंने काम किया इलाहाबाद में बिफोर टेकिंग अप राइटिंग एज अ प्रोफेशन. So he was awarded the Nobel Prize in Literature in 1907 and till date he remains the youngest recipient of the award. अब देखो बेटा, हमने इतने poets के बारे में पढ़ा. Read the description and name the following renowned poet of India. अब आपको इन्हें आइडेंटिफाई करना है. So let's start with number 1.
He is one of the greatest poet and writer in the history of Indian literature. Won the Nobel Prize for Literature in 1913. He had written in almost all of the branches of literature. It is as a poet अगर आप देखोगे so internationally उन्हें recognize किया गया है. गीतांजलि जो है उनका masterpiece है. कौन है ये? रविंद्रनाथ टैगोर जी. She was a very famous Indian poet and a major freedom fighter also, and she was noted child prodigy and master of the children's literature. Then she was given a sobriquet भारत कोकिला. उन्हें ना ये दिया गया टाइटल बेटा भारत कोकिला का on account of her beautiful poems and songs. रोजनी नायडू जी हैं ये. Then ये आपको याद रखना है भारत कोकिला. He is one of the few Indian poets who could blend both Western and Eastern poetic sensibilities in his poem. He was master in all genres of poetry. He has written the great epic Savitri, had shown excellent skills in narrative and as well as lyrical poetry. ये हैं आपके औरबिंदो घोष जी. बुकवाम हमें क्या बता रहा है? Despite being from the San Francisco, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो थे बेस्ट नोन एज अ न्यू इंग्लैंड पोएट हु कैप्चर्ड रूरल अमेरिका थ्रू पोएम्स अबाउट कॉटेजेस, बर्ड नेस्ट हो, स्टोन वॉल्स हो, स्नोई वुड हो, हॉर्स ड्रॉन कैरेजेस हो, हर एक को इन्होंने डिस्क्राइब किया है. दैट्स एंड फॉर द चैप्टर. लर्न द एक्सरसाइज केयरफुली.